Good morning, students. So today we are going to discuss about Kingdom Protista, and as you know, we have finished the topic Kingdom Monera in the last lecture. So today we will discuss about Kingdom Protista. The term Protista actually was coined by Ernest Haeckel. And what is Kingdom Protista? Kingdom Protista includes all unicellular eukaryotes. Do not get confused with Kingdom Monera, where we used to say Kingdom Monera or Moneran include prokaryotic unicellular organisms. So in case of Kingdom Protista, unicellular eukaryotes. तो दोनों में ऐसा फर्क क्यों है? मोनेरा में हम यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट्स यूज करते हैं एंड इन प्रोटिस्टा यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स. वो इसलिए because in case of protista actually all the organisms which are being included in this kingdom are have resemblance with higher plants or animals or the other kingdoms. यानी कुछ एक इसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो फंगाई से रिजेंबल करते हैं, कुछ एक ऐसे हैं जो एल्गे से यानी प्लांट से, और कुछ एक जो है एनिमल से. यानी उनकी जो नेचर है, जो उनकी रिजेंबलेंस है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन एटसेट्रा, वो रिजेंबल करती है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से. इस वजह से हम कहते हैं कि चाहे वो एक सिंगल सेल के बने होते हैं, लेकिन उनका जो नेचर है, उनकी जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है या उनका जो अदर बिहेवियर है, वो किससे मिलता जुलता है? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म से. दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू कॉल प्रोटिस्ट एज unicellular eukaryotes. They are generally aquatic in nature, both in case of fresh water and marine water as well. So let's categorize this kingdom Protista on the basis of their mode of nutrition. How do they derive their food and energy? So on the basis of mode of nutrition, we categorize kingdom Protista into photosynthetic category, heterotrophic category, or saprophytic or saprophyte category. So on the basis of mode of nutrition हमने इनको categorize कर दिया है photosynthetic, heterotrophs and saprophytic. So in photosynthetic category, as you know, these are autotrophs. They do have pigments to trap sunlight or solar energy, which converts into chemical energy in order to form a food for these organisms. So in the in the subcategorize, when we do subcategorize this photosynthetic category, first of all we have Chrysophyta. यानी इस photosynthetic category में, इन photosynthetic protists में हमारे पास क्या क्या आता है, हम किन किन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, वो है फर्स्ट वी हैव Chrysophyta, CRYSO. In Chrysophyta we have golden algae. We have golden algae. Golden algae which is also known as diatoms. तो हम यहाँ पे क्राइसोफाइटा में हम लोग क्या पढ़ेंगे? डाइएटम्स के बारे में. ओके. Then we have pyrophyta. In pyrophyta we would discuss about fire algae. Fire, fire algae. Why do we call it fire algae? Why do we call it fire? Because of having a capability of emitting light. Bioluminescence यानी कैपेबिलिटी ऑफ एमिटिंग लाइट. इसके बारे में जैसे आप पढ़ेंगे आगे किंगडम एनिमेलिया में, तो देयर इज अ फाइलम नेम्ड स्टेनोफोरा. तो उसमें द कैपेबिलिटी ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस इज बिकॉज ऑफ हैविंग अ ल्यूसीफेरिन प्रोटीन और एंजाइम. इस वजह से वो बायोल्यूमिनेसेंस की उसमें जो प्रॉपर्टी वो उसमें आती है एंड कैन एमिट लाइट. लाइट को वो एमिट कर सकते हैं. ओके. सो दे आल्सो डू हैव बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी. फॉर एग्जांपल डाइनोफ्लैजिलेट्स. जब यहाँ पे साथ में आ रहा है फ्लैजिलेट मीन्स दे डू हैव फ्लैजिला फॉर देयर लोकोमोशन. देन थर्ड वन इज यूग्लिनॉइड्स, और इसके बारे में आपने बहुत सुना है, यूग्लिना. ओके. यूग्लिनॉइड मीन्स यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ऐसा ये प्रोटिस्ट है
जिसमें की कैपेबिलिटी होती है कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बिकॉज इट डज हैव फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स टू प्रिपेयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो सनलाइट की प्रेजेंस में एज एन ऑटोट्रोफ ये बिहेव करता है। लेकिन जैसे अगर सनलाइट प्रेजेंट ना हो तो ये एज ए हेटेरोट्रोफ भी ये एक्ट कर सकता है। सो इन यूग्लिनोइड्स मींस यूग्लिना हम इसमें पढ़ेंगे। ओके, देन वी हैव हेटेरोट्रोफ्स और हेटेरोफिटिक कैटेगरी। सो वी हैव एनिमल्स लाइक प्रोटोजोन्स। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे अबाउट प्रोटोजोन्स, एंड डू रिमेंबर प्रोटोजोन्स आर स्मॉलेस्ट animal like organisms. Protozoans are smallest animal like organisms. इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे अबाउट सार्कोडीना। सार्कोडीना मीन्स अमीबॉइड प्रोटिस्ट, अबाउट अमीबॉइड प्रोटिस्ट। तो सार्कोडीना में क्या आएगा, अमीबॉइड प्रोटिस्ट, फॉर एग्जांपल अमीबा एंड एंटामीबा। And as you know, in amoeba, the locomotive structure is pseudopodia, and pseudopodia is also known as false feet, because in the structure of amoeba, what happens, the plasma membrane of that organism, means amoeba, actually it changes its structure, and जब वो अपना स्ट्रक्चर को चेंज करेगी, जो मेम्ब्रेन है वो धीरे धीरे जब आगे की ओर बढ़ती है इन ऑर्डर टू एनगल्फ अ फूड पार्टिकल, तो वो जो मूवमेंट, उस मेम्ब्रेन की जो मूवमेंट है, हम उसे क्या बोल देते हैं, स्यूडोपोडियल मूवमेंट और फाल्स फीट। देन वी हैव सिलिएटा। जब सिलिएटा की बात मीन्स सीधा मतलब समझाइए, सिलिएटा मीन्स व्हेन द लोकोमोटरी स्ट्रक्चर इज सिलिया। तो लोकोमोटिव स्ट्रक्चर दो तरह के यहाँ पे हो सकते हैं, फ्लैजिला as well as cilia. So in case of ciliata, locomotive structure is cilia. और ज्यादातर फर्क ये होता है कि जो फ्लैजिला नॉर्मली आपको मिलेगा ऑन वन साइड, और मीन्स ऐसा है कि ये एक साइड मिलेगा या तो दो साइड पे मिलेगा। लेकिन इन केस ऑफ सीलिया, अ प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ दीज लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स ऑल ओवर द बॉडी ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, लाइक इन पैरामीशियम। तो पैरामीशियम की आपने डायग्राम देखी होगी, तो पूरे जो इसकी जो स्ट्रक्चर है, जो डायग्राम है पैरामीशियम की, सारे ऑल अराउंड आपको वो सिलियरी स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे। तो सिलिएटा हैविंग लोकोमोटिव स्ट्रक्चर सिलिया, एंड एग्जांपल इज पैरामीशियम। देन वी हैव ज़ूफ्लैजिलेटा। देखो यहाँ फिर हमने क्या यूज किया, फ्लैजिलेटा मींस लोकोमोशन बाय फ्लैजिला। So in ज़ूफ्लैजिलेटा we would discuss about trypanosoma. Then we have sporozoa, and sporozoa they are also endoparasites. Parasites means those organisms which do live inside or outside the body of host and derive their food and energy for their own benefit, and they do harm the host. होस्ट को वो हार्म करते हैं और होस्ट की बॉडी से बाहर या अंदर रह के वो फूड एंड एनर्जी को वो ड्राइव करते हैं। बट दीज स्पोरोजोआ, दीज आर एंडोपैरासाइट, दैट मींस दे डू लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट। फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम, वेरी फेमस प्लाज्मोडियम, मलेरियल पैरासाइट। ये सीधा अटैक करता है होस्ट की बॉडी के अंदर जाके, ठीक है। एग्जांपल इज प्लाज्मोडियम व्हिच इज मलेरियल पैरासाइट। Then at last we have saprophytic. As the name mentions, saprophytic means they do drive their energy, food and energy, from dead and decaying organic matter. For example, slime molds. So this is an introduction about kingdom Protista and their categories on the basis of mode of nutrition. So do remember all of these. What is Chrysophyta, Pyrophyta, Eulenoids, Sarcodina, Ciliata, ज़ूफ्लैजिलेटा, Sporozoa, and slime molds, saprophytic, protists. Thank you very much.